we'll get started in a minute. And Simon joins us right now. Simon, how are you doing? How do you feel? I feel absolutely fine. I mean, Yeah. दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम प्यारी दादाजी संगत साधु वासवानी सेंटर वॉशिंगटन DC जे पारां सभिनीनि जो तहे दिल सां स्वागत था कयूं जे असां सां जुड़ियल आहिनि ज़ूम ते ऐं यूट्यूब ते. Today I would, since we are celebrating love, Valentine's Day, today I would like to share some inspirational quotes by our beloved master on love. So Dada used to say, love can keep you healthy and happy and help you face the problems of daily life in the right spirit. Love and fault finding never go together. The more you love, the less you judge. When we are in love, our entire personality changes. We become new. These are few of my favorite quotes of Dada on love. Hence I said I will say it today on the beginning of our satsang. And so on that note, अॼु जो सत्संग असां शुरू कंदासीं गुरु ब्रह्मा मंत्र सां. सुखमनी वचन थींदो, मन प्रबोध ऐं गीता जो 12हों अध्याय. अॼु असां सां जुड़ंदा जगदीश बजाज फ्रॉम टोरंटो ऐं असांजा लोकल सिंगर्स हूंदा भगवान अंकल, पल्लवी ऐं गणेश ऐं मां बि भॼन ॻाईंदासीं. दे विल ऑल सिंग फॉर अस. प्लीज़ असांखे साथ ॾिजो ऐं असां सां जुड़ियल रहिजो. दादा श्याम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. दादा श्याम. दादा श्याम प्यारी संगत, ये सुखमनी जो वचन जो टाइम है. असी पोतायूं 6 अष्टपदी 3 पौड़ी ते. जय प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही. जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत. जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता के. जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊंचे. जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे है. संधि में अर्थ. जय जे कृपा सां तोखे निर्वैर ऐं सुंदर सोन जहिड़ो शरीर दुर्लभ देह मिलियो आहे. उन प्यारे राम सां लिव लॻाए. जंहिंजे कृपा सां तुंहिंजो ढक ढकीजे थो पत रहिजी अचे थी तंहिं हरीअ जा गुण ॻाए ऐं मन ऐं सुख पाए. जय प्रभु जी कृपा सां तुंहिंजा ऐब ढकियल रहनि था
तैं परिदे पोष मालिक जी शरण ऐं मन वञी वठ तूं। जंहिंजी कृपा सां को लिफ्तो सां पहुची नथो सघे, तंहिं वॾे प्रभु खे ऐं मन श्वास श्वास सां तूं यादि कर। जंहिं प्रभु जी कृपा सां तोखे हीअ दुर्लभ देही मिली आहे, उन प्रभु जी तूं भक्ति कर। दादा श्याम धन गुरु नानक। दादा श्याम धन गुरु नानक। मन प्रबोध श्लोक 25 खां 28 ताईं। संतन में ऐं पापियुनि में इक ही आहे, धर्मन में नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर साईं मुल्कन में पीर पैगंबर औलिया सब एक जा सुंदर रूप, नूरी गोबिंद गाए मना, हर हंद जागे जोत अनूप, सुख सच्चो जे तू चाही, संत जना के चरना वे, नूरी गोबिंद गाए मना, दुर्लभ उत्तम मानिक दे, कौरिय कातिर रतन विन्यायन, मोह माया में प्यालोक अटकन, नूरी गोबिंद गाए मना, धर्मन में प्या मूरख भिटकिन, नूरी गोबिंद गाए मना, धर्मन में प्या मूरख भिटकन। दादा श्याम। Shlokas 13 to 20, translated from the original Sanskrit into English rhymed verse by Gurudev Satsang. The blessed Lord said, "Who hateth none, from self is free, in pleasure pain has poised mind, and is compassionate and kind. My best beloved saint is he, who dedicateth unto me his mind and reason, is content, controlled, his life still in me blent. My best beloved saint is he, who harms no bird nor beast nor flea, and doth not feel disturbed here by any, and is freed of fear. My best beloved saint is he, who nothing wants, doth work for me, yet is from work detached, serene, well balanced, unperplexed, and my best beloved saint is he, who fixed in faith and love on me, doth dote on me, yet scorneth none, and fruits of labor all doth shun. My best beloved saint is he, who is alike in pain and glee, in fame and shame, in cold and heat, to foe and friend in strength defeat. My best beloved saint is he, who bears blame, praise, is passion free,
who homeless is and firm in mind, in silent love who life doth find. My best beloved saint is he. They who this nectar drink of me, and know the law that giveth life, and cling to faith away from strife. My best beloved saint is he. Om Tat. Thus endeth chapter the 12th of the Bhagavad Gita, entitled Bhakti Yoga, or the Yoga of Devotion. Dada Shah. Ha 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 असांजा दादा चवंदा हुआ परमपुरी में दादा प्यार 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 प्यारे ही रस्तो प्यारे ही राम प्यारे ही रस्तो प्यारे ही राम प्यार बिना ना ब्यो कुछ प्यार बिना ना ब्यो कुछ प्यार ही ईश्वर प्यार ही अल्लाह प्यार ही ईश्वर प्यार ही अल्लाह प्यार बिना ना ब्यो कोचा हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार प्यार ॾेई हली पहुचो पार प्यार ॾेई हली पहुचो पार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार प्यार बिना ना बी का शक्ति प्यार बिना ना बी का शक्ति प्यार ही आहे सच्ची भक्ति प्यार ही आहे सच्ची भक्ति प्यार बिना ना ॿियो कोचा प्यार परम पुरुष जो दान प्यार परम पुरुष जो दान प्यार ही पहुँचाए नूरी निर्वाण प्यार ही पहुँचाए नूरी निर्वाण हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार प्यार ॾेई हली पहुचो पार प्यार ॾेई हली पहुचो पार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार प्यार ही सच ॿियो सभु कूड़ प्यार ही सच ॿियो सभु कूड़ नूरी प्रीतम प्यारो खिन में पाए पार ही नूरीअ जो आहे प्यार प्यार ही नूरीअ जो आहे प्यार प्यार में अंजलि पाण पचाए प्यार में अंजलि पाण विञाए प्यार में अंजलि पाण विञाए हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार प्यार ॾेई हली पहुचो पार प्यार ॾेई हली पहुचो प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार 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 हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो प्यार ही प्यार
प्यार बिना ॿियो सभु आहे कूड़, प्यार बिना ॿियो सभु आहे कूड़, प्यार ॾेई हली पहुचो पार, प्यार ॾेई हली पहुचो पार, प्यार हिक हिक खे ॾियो, प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो, प्यार ही प्यार हिक हिक खे ॾियो, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। दादा श्याम। अरे अंकल, it feels you are fully in love with everybody. Thank you अंकल, तव्हां एतिरो जोश सां ॻायो ऐं सुठो, it was तमामु सुठो अंकल, thank you. Thank you. दादा शुक्रिया। Yeah, and Pallavi, we invite you. Thank you Dada for Shyam. joining us. Dada Sham, we look forward to Thank you. listening to you. Thank you for inviting. Thank you for giving the Yeah. opportunity. Okay. So राधा कृष्ण का भजन गाते हैं वैलेंटाइन की टाइम पे। Hope you Sure. enjoy. Yeah, thank you. यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, अरे वो बॉम्बे है, बॉम्बे है पापा। लाडला कन्हैया मेरा लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, काले नैनो वाली ने हो, काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई इतलाती, इतने में राधा प्यारी आई इतलाती,
मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अच्छा। Dada Sham, beautiful as always. One of my favorite bhajans. Thank you for singing. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, we now invite our most awaited Jagdish ji. I will. We always look forward to listening to you. And when it came to Valentine's and the celebration or the satsang today, we only thought of you, Jagdish ji. You know, You sing Romaji, with so much love. Yeah, yeah, uncle. Romaji, I was talking to Jagdish ji. I told him, when we call you and when you sing, we feel like Jagdish Singh has come to us. He's such a great and such a humble, such a nice person. Whenever we tell him, हमेशा ईंदा आहिनि, कॾहिं असांखे न कहते ऐं ॻाइण बि सचपच जगदीश सिंह वांगुरु अथसि। थैंक यू जगदीश सिंह। हा, रियली ऐं मधुर साॻे नमूने कराईंदो आहे जीअं जगदीश सिंह कराईंदा हुआ। थैंक यू। Yeah. I definitely don't deserve these compliments, but I accept them with folded hands. Thank you so much. Yeah, we invite you and we are waiting to listen to you. Thank you for joining us today. Not at all. My pleasure. शुकराना शाह ऐ तुंहिंजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुकराना शाह ऐ तुंहिंजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो प्यो पुकारिया प्रीतम आजा ओ प्यो पुकारिया प्रीतम आजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुकराना शाह ऐ तुंहिंजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो परे रखिया पास विहारी परे रखिया पास विहारी मेहर नजर से सदा निहारी मेहर नजर से सदा निहारी पास विहारी सदा निहारी पास विहारी सदा निहारी शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो
उठंदे विहंदे हलंदे चलंदे उठंदे विहंदे हलंदे चलंदे कमकार विच या घुमंदे फिरंदे कमकार विच या घुमंदे फिरंदे हलंदे चलंदे घुमंदे फिरंदे हलंदे चलंदे घुमंदे फिरंदे शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुकराना शाह है तुंहिंजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो साख निंदा या सुख में दुख में साख निंदा या सुख में दुख में बंगलन में या बुख ही बुख में बंगलन में या बुख ही बुख में सुख में दुख में बुख ही बुख में सुख में दुख में बुख ही बुख में शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुकराना शाह है तुंहिंजा शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो शुक्र आहे शुक्र आहे शुक्र तुंहिंजो 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 Amazing. Thank you. This was so beautiful. आवाज ठीक आ रहा था हाँ बिल्कुल ठीक परफेक्ट थैंक यू This is my favorite bhajan and Bhagwan Baba asked me to sing this and the other one as well today. ओ पालनहारी निर्गुण 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 और न्यारी तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हें हम का हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुमरे बिन हमरा
ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। Feel you should continue. It is so soothing and so soulful. Thank you so much. But जगदीश जी सभिनी जा रूह ख़ुशि थी विया, अहिड़ो सुठो ॻायो तव्हां। थैंक यू, शुक्र तव्हांजो, शुक्रिया। yeah, thank you so much. Thank you, Jagdish. That was beautiful. And that's it. I know it's one of your signature songs, so really happy to hear that again. Thank you. Okay. Sorry. So now we'll sing a song. Since it is Valentine, it's a bhajan in a way. This song is near and dear to me. What we're trying to say here is, दादा चाहे कुछ भी हो जाए हमारा साथ नहीं छोड़ो. So let's sing together. Roma, are you ready?
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हाँ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ दादा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। तुम देना साथ मेरा ओ दादाजी। गणेश रोमा जी ब्यूटीफुल। एक लाइन और ऐड करो। तुम देना साथ सबका ओ दादाजी। बिल्कुल
but very good. Thank you. Thank you. Thank you. Dadasha. Roma dado sutho gaye. Thank you. Nuri simare simare sukh paye. Nuri simare simare sukh paye. अज जो वचन श्री नूरी ग्रंथ साहिब मां सुफ़ो 831 पेज 831 नंग निमाणींदा पालिज नंग वे परवदगार ए बनहाणी आया गुनागार बालज नंग ए परवदगार बालज नंग ए परवदगार तुंजे दल जी आया दासी ऐसू असंदा सरदार पालज नंग ए परवदगार पालज नंग ए परवदगार लेखा चोखा छॾज तू राणा दर ते बिहार जे खिज़मत गार पालज नंग ए परवदगार रात उंधाई विच आहे सजना खोलज नूरी कोई इसरार पालज नंग ए परवदगार रात उंधाई विच आए सजना खोलज नूरी को इसरार पालज नंग ए परवदगार दादा श्याम Dada Sham, English translation. Grant your protection to Nimani. Grant me a protection, O guardian divine. A sinner I am and full of faults. Grant me a protection, O guardian divine. A slave at your door I am, O my beauteous master. Grant me a protection, O guardian divine. O prince, demand not a reckoning of my actions, but accept me as a servant at your door. Grant me your protection, O guardian divine. Dispel the darkness of the night around me, O beloved, and come and disclose your marvel to me, says Nuri. Grant me your protection, O guardian divine. And come and disclose your marvel to me, says Nuri. Grant me your protection, O guardian divine. Dada Sham. दादा श्याम गड्जी आरती कयूं हाणे ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे पीर भात
Friends and fellow devotees of the Lord, namaskars to every one of you. Not unoften have I heard the words. They keep ringing in my ears. Learn just one word, forget all else. Let your heart be pure. All else you have learned matters little. Friends, we spend so much time reading books of all kinds, books of our special interest, books to update our professional knowledge, books for entertainment, and so on. But books have their limitations. I say this advisedly, for I too am a book lover. Still, I do not hesitate to tell you that book learning is at best limited learning. True, we acquire knowledge from books, but it is abstract knowledge arising from dry words. We acquire knowledge, but all knowledge is not wisdom. And the reading of books does not always cleanse the heart and the mind. The volumes of words we read ultimately becomes a burden which we are unable to carry. In one of our ancient scriptures, a comparison is drawn between a man who is a great scholar and a donkey bearing a load of sandalwood. A scholar may have read hundreds of books. He may have gathered extensive knowledge. But if this knowledge cannot be transformed into wisdom and translated into deeds of daily living, then he is little better than a donkey carrying a bag of sandalwood on his back, unaware of its fragrance and value. My dear brothers and sisters, we have to purify our hearts, our inner instruments. Only then may we find the grace to witness the light. This illumination of the soul is true wisdom. Reading scriptures, memorizing them, or reciting them before others is neither wisdom nor true knowledge. Memorizing verses from the Gita, Gurbani, or Santabani and discussing it with others is not spiritual wisdom. It is merely an intellectual activity. What matters is that we imbibe the spirit of the scriptures and make an effort to bear witness to what we have learned in deeds of daily living. We must cultivate sympathy. We must go to the satsang, enjoy the company of holy ones. We must serve mankind without any expectation or thought of return. We must protect the birds and animals. We must protect the weak against exploitation. Better than all this is to create an urge, a thirst and a longing for that light. This longing should be deep and intense, like that of the gopis for Krishna. If we can evoke such deep yearning for the Lord, then purification will be easy and our goal will be within reach. There is an interesting story that I would like to share with you in this regard. Son once visited a city where his discourses and teachings captivated the hearts of all seekers. Many people flocked to see him, hear him, and get his blessings. Among them was a young man who fell at the saint's feet and said, "Please help me see the face of the beloved. Please help me commune with Allah, for my heart is smitten with longing for the Lord." Sant Farid smiled at the young man and asked him, "Have you ever fallen in love? Do you know about the experience of Ishq, which has enslaved a million hearts?" "Alas, no," the young man replied. "Till now I have never experienced that strange emotion you speak of." "In that case," Farid said, "I suggest that you fall in love. Fall in love with someone, learn the ways of love, and then come back to me. I will show you how you may realize God." So determined was the young man to realize God that he set about following the saint's command. He walked the streets of the city, but he saw no one with whom he could fall in love.
As he wandered throughout the city, he happened to cross the palace gates. Glancing at the upper story, he saw a beautiful girl standing near a window. Here is the girl I was looking for, he said to himself. I shall fall in love with her. I shall gain the experience of love that the saint spoke to me of. Straightway, he positioned himself outside the palace in such a way that he could look at the window directly, and he stood there trying to catch a glimpse of the girl. Now the girl happened to be the princess of the realm, the only daughter of the king. She saw the young man standing beneath her window, staring at her whenever she happened to pass. At first, she dismissed him as a curious passerby. But when he continued to stand there day after day, she became annoyed. She sent her waiting woman to chase him away. The palace maids approached the young man and said to him, "Leave the spot at once, or you will be in trouble. The princess is upset by your constant presence. We were sent to drive you away. If you do not leave, she may complain to the king, and you will be sent to prison or thrown out of the kingdom." The young man was unabashed. "A holy man has sent me here to learn the experience of love," he said to the woman. "I am determined to learn the lesson thoroughly. Come what may, I shall remain here looking at the girl I love." When the princess was told of this, she was taken aback. What kind of madness was this? How could one deal with a man who was set on such a foolhardy mission? Before she could decide on how best to deal with this lover, news reached the king's ears that a young man was standing outside the palace, staring at the princess's window. The king's blood began to boil. Why, the scoundrel must be shot dead. He summoned his minister and ordered him to put the man to death. By now the minister had been apprised of the whole story. Earnestly he said to the king, "Let us not act in haste, your majesty. The young man has spoken of true love. A lover has to be treated with caution. His sighs, his tears, and his anguish have the power to move heaven. Many empires have been destroyed because of the pain of lovers. If the young man curses us, God will hear the curse and send disasters upon us." The king was alarmed. "You may be right," he said, "but I urge you to do something, anything, to drive the man away from there. The sight of him standing there with that intense look unnerves me. I do not want those eyes to behold my daughter. Please do whatever you can to spare us from those eyes." The minister thought carefully and worked out a strategy. He went to meet the young man and heard him out. "I understand your wish," he said to the lover. "You are determined to go through the experience of love. I will tell you how your desire may be accomplished. Come with me." The minister took the young man to the entrance of the watchtower, just inside the palace gates. "Climb this tower," he said to the young man. "When you reach the top, you will see the princess standing below. If you truly wish to attain your beloved, then jump down from the top of the tower and she will be yours." The young man accepted the minister's challenge. In a matter of minutes, he had climbed the steep steps of the tower and reached the top. The minister now persuaded the king and the princess to walk down to the tower. He explained to the king, "This youth is either a madman or a true lover. I am now going to ask him to jump down. If he smashed to smithereens, our problem is solved. If he survives, then he is a true lover and we should deal with him carefully." And so it came to pass. The princess stood below and the minister cried to the young man, "If you truly love her, jump down now. But consider carefully whether you really want to do this. Think of the risk.
the danger involved. Retract before it is too late. The young man replied, this tower is nothing. I would jump into an ocean, walk into a fire, and fall from a cliff for the sake of my beloved. He looked down at the princess, who appeared to be a tiny speck below him. Calling the name of God, he jumped down. There was a furrow. The young man lay lifeless at the feet of the stunned princess. She began to weep bitterly. The king and the minister were too shocked to react. At that very moment, Farid reached the palace. At a glance, he took in what had happened. Taking stock of the situation, he said to the princess, go near the lifeless form of this man, of this young man, and call out his name, Salim, Salim. If he is a true lover, he will open his eyes at your voice. The princess did as she was told. She drew close to the young man and whispered, Salim, Salim. A miracle came to pass. The young man not only awakened, he was up on his feet when he saw Farid. Farid then said to him, behold, young man, the princess is here by your side. You are free to marry her and become the lord of this vast kingdom. But what will I do with this kingdom? Cried the young man. You know I came here to prove myself. My one and only desire is to see the face of Allah. All the rest is of no interest to me. Look at the princess, said Farid softly. Is she not beautiful? Would you not be a lucky man to marry such a girl? The young man stared at the princess. True, she is very beautiful, he agreed, but her beauty is not without blemish. And as for me, my heart is set on meeting Allah. Pleased at the answer, Farid beckoned the young man to follow him. Come with me and I shall get you a glimpse of true beauty, beauty which is pure and blemish free. What one needs is devotion. What one needs is a thirst, a yearning, a passion for the Lord. If you want to see the splendor of the true beauty which is beyond compare, you have to cultivate an intense feeling of love and a deep devotion for the Lord. Blessed is he who is privileged to see the eternal home. Fortunate is he who sees the illuminating light. At first he gets a glimpse of it himself. Then, enlightened, he sees the light outside of him, around him. He perceives it everywhere. जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है. Wherever I look, I see him and him alone. Every object radiates his light. To him the universe is God-filled. Every atom in the universe is radiant with his presence. His identification with others is perfect. He sees himself in others. He feels their sorrow and suffering as his own. He suffers with them. He rejoices with them. Such a person sees the same life in everything, in nature, animals, birds, insects, plants and trees. To him birds and animals are an image of God. He feels the same life flowing in every object, in sentient and in non-sentient things. Such awareness is true knowledge. It is true wisdom. With this awareness comes the yearning to see, to meet, to merge with that light. And may the eternal light lighten your way in life. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dada,
Start, Renu. तू ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। दादा श्याम। दादा श्याम। दादा श्याम। वाह वाजते विहारी तू, फजल नूरी निहारी तू। शुक्र आहे शुक्र तुझो, शुक्र आहे शुक्र तुझो, शुक्र आहे शुक्र तुझो। तव्हांखे माना ख़बर आहे लव? जेॾो तुंहिंजो नाम, अला मात बाझब ओॾाई मङा। रे थंबे रे थुणे, पोइ तूं त छपड़ तूं छा। आऊं गुजारो कां, जो मालूम तो खे सब की हेरा हेरा। दाता तू न छॾ जाए, मां जियां तुंहिंजे आसरे। सभई पारूं सूरजूं ओ वञा घोर तो तां। ओ हिकु तूं न छॾ जाए, ॿियो मुल्क मटियो तो तां। तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काई, तुंहिंजो दर सखाजो खुलियल आहे सदाई। कड़ी शाह प्यादा नी प्यादन खे शाई, जेका मर्ज़ी तुंहिंजी थींदी नेठ साई। जेका मर्ज़ी तुंहिंजी थींदी नेठ साई। अचे जेको तो वञे की न खाली, जहिड़ी आस जंहिंजी तहिड़ी तो पुॼाई। जहिड़ी आस जंहिंजी तहिड़ी
तो पुजाई दादा श्याम दादा श्याम जोली जन वरदाता महादेव आए पलव जेके पाए तुंहिंजे दर ते आया उन्हनि जूं तूं आशूं उमेदूं पुॼाई कटे कष्ट तन जा मन जा वठी पंहिंजे हथ सां साईं दग लॻाई अहिड़ो नाथ में जो महादेव आए भोलानाथ आए जलण जी महल थई जले वठ जोली ॼण वारो दाता महादेव आए भोलानाथ आए दादा श्याम आए दादा श्याम दादा श्याम प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूरीक तू ही मददगार उठाए है अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा मेरा नाम हो रहा है। दादा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। दादा श्याम। Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the friends we meet. Thank you, God, for the songs we sing. Thank you, God, for everything. Dada.